Hello friends, good morning, namaskar दोस्तों, very warm welcome to another edition of Commodity Market and Forex Analysis with SD. And मैं हूं SD शानंद दास, Forex Commodity Mentor associated with Elan Markets. My specialization is multi-asset trading and investing opportunities with a global macro specialization. तो ये वीडियो में यूजुअली आई डू इट रेगुलरली टू सजेस्ट व्हाट आर द ट्रेड्स आई एम लुकिंग एट, व्हाट आर द ट्रेड्स आई एम डूइंग, ताकि जो मेरे लर्नर्स है दे कैन गेट एन आइडिया, प्लस दोज हु आर माय सेटअप की यूजर्स है दे आल्सो कैन गेट एन आइडिया। और इसके अलावा आपको भी अगर ये वीडियो से हेल्प हो रहा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो चलिए स्क्रीन शेयरिंग पे सबसे पहले करेंसी कमोडिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डे यू मेक अ हैबिट दैट यू विल लुक एट द इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर आप देखेंगे, उसमें डिफरेंट इकोनॉमिक कैलेंडर आप चूज कर सकते हो। यू कैन गो फॉर investing.com वहां पे जाके आप इकोनॉमिक कैलेंडर ढूंढ सकते हो। यू कैन गो फॉर EN मैक्रो माइक्रो, which is my favorite website for this macro analysis. और आप मेरे student है, don't directly purchase, you can get an awesome offer, go with that one. तो ये रहे मैक्रो माइक्रो के, दिस इज द मार्च, ये सारे डेटा है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI, दिस इकोनॉमिक कैलेंडर टुडे यू कैन सी ट्यूसडे। ऑलरेडी PMI जो आने वाला था मैक्रो साइड, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग। investing.com में भी दिखा देते हैं। यहाँ पे टूल्स में जाके, इधर है टूल्स, वे टूल्स में जाके यू कैन चेक द इकोनॉमिक कैलेंडर। और उसमें आप जो आपका पसंद है कंट्री, विच एवर कंट्री यू वांट, यू कैन जस्ट यूज इट। जैसे फिल्टर में आई हैव सिलेक्टेड ओनली 3 स्टार, एंड नाउ लेट मी सिलेक्ट द 3 and 2 स्टार। देन कई सारे डेटा मिल जाएंगे। So broadly, Tokyo current, this is China services PMI not so strong, so China weakness बरकरार। बट एक चीज नोटिसेबल की बात यह है कि ओवरऑल 50 के ऊपर, वन इज ग्रोथ, सेकंड चाइना मार्केट इज अप टुडे, so this is not being taken as bad news, this is on the positive side. So China is coming back, this is a good news of the story. नेक्स्ट जो आज इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सारे सर्विसेज PMI देखिए, जर्मनी सर्विसेज PMI, यूरोजोन सर्विसेज PMI, साथ में कंपोजिट मिक्स ऑफ सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग PMI विल कम। साथ में ISM रात को, नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब सर्विसेज PMI, ये रिपोर्ट आज बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे फोरेक्स मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट को। बट ओवरऑल इस वीक का जो दो मेन इवेंट है, दीज टू, अनलेस वो दो इवेंट हो रहे हैं, उसके लिए मार्केट स्पेशली फोरेक्स विल वेट। one is ECB central bank rate decision, and on Friday, that is on Thursday, and Friday we have the most important non-farm payroll data। उस दिन मेरा लाइव सेशन है, आप मिस मत कीजिएगा। मैं, you can, if you want, you can just register with Elan Markets by contacting their team, their sales team, Arpan Bhattacharya, and there you can get in touch। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर है लाइक TMP रेनबो, then don't contact Arpan, just contact your course coordinator. If you're only a non-subscriber and want to join in, then you can subscribe with Arpan Bhattacharya. Okay, these are economic events. So आज कई सारे आफ्टरनून के टाइम we might see volatility because European PMI, and evening time market will give us quick move, quite a sharp move, bond, dollar index, gold, silver, because of ISM services PMI। जैसे फ्राइडे मैन्युफैक्चरिंग PMI वीक आया था, it pushed the overall interest rate down, it pushed the dollar down, and it pushed the gold price higher। और गोल्ड तो अभी भी जा रहा है, हम लोग डिस्कस किए बाई का 2060 से मस्त जा रहा है। 2060 का माउंटेन टॉप ब्रेकआउट था, कल फिर से पोजीशन ऐड किया, ऑसम मूवमेंट चल रहा है गोल्ड में। आई होप यू आर एंजॉयिंग द रैली। तो हम लोग करेंसी मार्केट में आ गए। करेंसी मार्केट से पहले हम लोगों को देखना होता है बॉन्ड मार्केट, दिस इज अ जनरल, इसके अलावा भी फंडामेंटल है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट दिस इज अ नॉर्मल फंडामेंटल जो आप रेगुलर चेक करना चाहेंगे।
And this is the China coming back. So हमारे जो ETF we discussed that is going good. हम लोग एकदम low level से बात किए थे. Then further breakout पे ऐड करने का. But after a correction से थोड़ा टेंशन तो हो ही रहा था because China has been very weak. Fundamental staying from here in India, it's not, we cannot fully certainly say yeah things are have changed. But yeah, overall the rainbow setup is suggesting that buyers are still in control. It's likely we will stay in this China ETF unless we get a full red candle. तो चलिए 2 year इंटरेस्ट रेट, ये चाइना एक्सचेंज ट्रेडेड बॉन्ड के बारे में जो मैं बात करूंगा वो मेरा दूसरा वीडियो पे आई एम गोइंग टू डिस्कस इट, नॉट इन दिस वन. So overall 2 year interest rate has been down 1, 2, 3, 4, 5 consecutive days. It has been down 1, 2, 3, significantly down, and red caps आया था on the 6th. So overall 6 days down and 5 consecutive broadly red down days. लॉन्ग टर्म 10 year इंटरेस्ट रेट, इसका भी हम लोग बात किए थे. दिस वाज लुकिंग बियरिश. दिस इज नॉट सो डॉलर पॉजिटिव. ओवरऑल देखा जाए नॉट सो रियली दैट ग्रेट डॉलर पॉजिटिव ऑन द इंटरेस्ट रेट. अगर एक फंडामेंटल जो है डॉलर के ऊपर भारी पड़ेगा और पड़ भी रहा है, इसीलिए वन ऑफ द रीजन कि गोल्ड ऊपर जा रहा है. So now let's go back to the currency. Let's go to the dollar index. What I'm seeing in the dollar is a bearish flattishness. ये दिख रहा है momentum से. Now, is this going to be a divergence? Buy side के लिए हम लोग soon पता चल जाएगा because cloud is not making lower high. Let me check what's wrong. अगर आपको ऐड करना है इंडिकेटर, गो टू इंडिकेटर, इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट, उसके अंडर यू कैन जस्ट अप्लाई एचडी रेनबो वेव वर्जन 1 and go to forex currency and apply. You will get into the currency setup. तो हमें डॉलर इंडेक्स करंटली वी आर विजुअलाइजिंग, सो इट इज अंडर प्रेशर. कई टाइम से हम लोग ब्यूटीफुली कैच किए थे, बट दिस इज विद इन अ रेंज. बेटर हम लोग डॉलर इंडेक्स में कुछ ना करें. वी लुक फॉर इंडिविजुअल पेयर जिसके अगेंस्ट डॉलर ज्यादा वीक है. तो रिगार्डिंग डॉलर का वीकनेस के रिगार्डिंग मेरा एक ट्रेड है जो करंटली थोड़ा लॉस में मूव कर चुका है बिकॉज दिस इज स्टिल इन अ रेंज. इसका बाद वी डिस्कस्ड ऑन दिस. Now I'm expecting a move towards at least 30, 82.5, मतलब around 40 पैसा move to the downside to the USD INR dollar interest rate. Overall में मैं environment में exchange expect कर रहा हूँ. And I have not seen a red background in the weekly chart of USD INR for a very long time, at least not since 24 July 2023. And consecutive 3 red full candles with a red background we have not seen almost since very long time, which is about Jan 2022. So this could be a change in the tone. There is a change in the environment in terms of interest rate. If India is relatively much well placed in the current environment, ये मैं बार बार बोल चुका हूँ. So we may not get the advantage from the, मतलब ये अगर बड़ा मार्केट में जब सेलिंग आएगा ओवरऑल, तो हमारे इंडियन मार्केट जो है इक्विटी वो भी सफर करेंगे. But this USD INR this time may benefit because things are underlying, things are changing in India. Overall growth scenario is overall improving, and India has maintained as a overall outlier and shining star in this recent slowdown also. That does not mean कि हमारा market protected रहेगा, equity market. But this is maybe we'll do better recovery. Maybe in the next cycle हमारा return, मतलब stock market will do way better. But in many cases, I think stocks are getting way overvalued because of the parabolic rise जो चल रहा है market में. But still, market is bullish, and I think overall it will continue. So now moving from USD INR, sorry थोड़ा divert हो गया. We'll come back to Euro USD. This is the usual flow we go with. आई होप ये एंड तक आप देखेंगे क्योंकि वी आर गोइंग टू कवर ऑल द करेंसी एंड कमोडिटीज दैट इज ट्रेडेबल. यूरो यूएसडी विल गो टू द डेली चार्ट. डेली चार्ट में आई गॉट अ बाइंग चांस.
Yesterday, this was a full green candle. As you can see, there was no red cap by the time apna closing aaya. So I entered small position in Euro USD, and today I might increase the position, but I'm not ready क्योंकि 125 minutes में एक करेक्शन हो रहा है, तो मैं अपना पोजीशन जो है फाइन ट्यून करता हूं विथ 125 मिनट्स चार्ट. So 125 minutes chart में we don't have a bullish candle, so I will place an alert कि better entry के लिए price action bullish and create आपका trading का काम हो गया. एटलीस्ट ऐसे मैं करना पसंद करूंगा. मेरा आउटलुक डिसाइड हो गया. आई वांट टू बाय अगर आफ्टर 11:30 12, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स को मुझे खोलना पसंद है. So overall लग रहा है यूरो यूएसडी could go for another round of comeback and a test of this region. तो कुछ पोजीशन से I want to try this out. So FOMO quantity already placed yesterday and this is going to continue. Next we have GBP USD. GBP USD, I'm not so sure, but this looks like a hot comeback, very hot comeback. Now big data are over there like ECB and non-farm payroll. We may see a strong recovery. क्योंकि अगर 2.66 ये लेवल का हम लोग बहुत बार बात किए, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है. So yesterday I was not sure what to do, but it is sustaining overnight. It has sustained above this level 1.266. So I'd like to add a FOMO quantity into this one once the European market opens up. And उसके लिए 125 minutes में एक फाइन ट्यून करते हैं. तो 125 minutes में एंट्री लगाना होगा. Let the chart come. It depends on, I think internet speed is, mine is suffering today. Yeah, it is. It has come back. So there is a consolidation. मतलब अभी jump नहीं कर सकते. I'll wait for the breakout. More of a 1.27 दिखा रहा है. So I place the price action bullish alert, and price action bullish होते ही GBP USD I'll enter after 11:30 in 125 minutes. अगर नहीं हुआ हम लोग एंटर नहीं कर पाएंगे और एंट्री करेंगे. I'll do FOMO quantity क्योंकि मुझे पता है मेन रेजिस्टेंस एरिया is still not cleared. तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है why I'm entering then? Because there are events which are coming beyond my time frame. That means that it can go up in the evening. The way I'm seeing it, in the evening there are very strong moves and it can happen beyond my time frame. So as long as the outlook is decided, I can definitely start off with the FOMO quantity. I'm not against the market. I'm going with the market as the market is telling me. जैसा बोल रहा है उस हिसाब से काम कर रहे हैं. So next are dollar yen, another good pair, but this is now confusing. It gave me an exit. We exited. Now it gave yesterday a green candle. I did nothing. I don't think today I'm also ready to do anything. ST Momo is bearish. This is it can go up, but it depends a lot on interest rate. And all the interest rate kind of move will come in the evening. So I'm right now avoiding this one. Rather, I'll prefer to do anything with the JPY INR rather than dollar yen. Dollar yen can go up, but जब तक एक रेंज क्लैरिटी नहीं मिल रहा और कैंडल बड़ा नहीं हो रहा ऑन द डायरेक्शन, आई एम फुल्ली नॉट प्रिपेयर्ड टू डू इवन ऑन द फोमो साइड. फिर हम लोग जिस पेयर इंडिया में पेयर में आ रहे हैं, दोज हु आर इंडियन पेयर, यू कैन लुक यूरो आईएनआर. दिस इज आल्सो अनदर आई हैव एंटर्ड. कल ग्रीन बैकग्राउंड ग्रीन कैंडल था. नाउ आज भी एंट्री करने का प्रोग्राम है विथ 100 की और क्वांटिटी बढ़ाने का विथ 125 मिनट्स. डेली चार्ट 120 ये रहा. अगर इस कैंडल है तो मैं इसमें एंट्री करना चाहता हूं, बट माय मार्केट विल बी क्लोजिंग बिफोर द होल डे इन फोरेक्स. सो फाइन ट्यूनिंग इज इंपॉर्टेंट. सो 125 मिनट्स में वी आर नॉट रेडी. मैं इसमें एग्जिट क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज इट्स जस्ट स्टार्टर क्वांटिटी फोमो एंड आई एम ट्रेडिंग बेस्ड ऑन डेली. So I'll not be exiting into this one. Only a full red candle will be a major concern. So here I will do that price action bullish and my trading is done in Euro INR.
So here I'm looking at GBP INR. Now this one I'm not ready to do anything. This is a comeback, could go up, but ये ऐसे जगह से it may fail as well. Now GBP USD का जो उसमें भी fail हो सकता है, but उसमें position much better. इसमें अगर fail हुआ, it can go significantly down. It's really not great. So I'll wait for the breakout of this level. Once 105.5 breaks higher, then only I'll consider a little bit of entry in GBP INR. Still within a range, बहुत डेंजरस जोन के आसपास है, तो इसमें अवॉइड करना ही मेरा गेम होगा. कभी कभी ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड होता है, तो यही मेरा ट्रेड है, तो कोई ट्रेड ना करना. So this is looks the one that is interesting. ये मेरा एंट्री के लिए suitable है कैंडल वाइज. नाउ ST मोमो इज बुलिश, तो हम लोग शॉर्ट एंट्री नहीं कर पाएंगे. सो इसमें जो अलर्ट आपका सूटेबल है, इसमें आई वेट, बिकॉज USD JPY कंफ्यूजन स्टेट में, स्मॉल स्टेट में, इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंट. But INR itself, I'm feeling a bit of strong. Matlab USD INR towards downside. So JPY INR short to me looks better. So short momentum bearish का alert डाल दीजिए, and it is done. Short momentum will be bearish. जब ये bearish हो जाएगा, I'll be alerted. Next we have GBP INR. This is we have discussed GBP INR. जो next sorry, next जो trade that have placed, that is euro yen and pound yen. Pound yen yesterday gave an awesome move. ये रहा euro yen gave a full green candle. आज भी एक green है, but मैं entry नहीं कर पा रहा हूँ, because I can see correction red. अगर 125 minutes में जाए, we'll be able to visualize कि 125 मिनट्स में एक करेक्शन चल रहा है. और once वो करेक्शन ओवर हो जाए, once the correction is over with ST Momo bullish, currently full green candle but no ST Momo bullish, then we will be able to re-enter euro yen. So euro yen हम लोग मस्त, we enjoyed a very awesome ride. We exited on the almost at the top. Now I have re-entered again. Today I will enter with 125 fine tuning. Pound yen, we exited out almost at the top. Waited for re-entry with full green candle. आज एंट्री कर सकते हैं, बट स्टिल नॉट रेडी, क्योंकि देखिए एक रेड कैंडल. सो वी हैव टू वेट फॉर 125 मिनट्स फाइन ट्यूनिंग. अगर 5 बजे के अंदर नहीं आ रहा है फाइन ट्यूनिंग, देन आई हैव टू रियली कंसिडर, जो मैं कर पाऊंगा ऑब्वियसली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, कि ट्रेड रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए. आई थिंक दैट उतना जजमेंट आई थिंक आई विल हैव. सो ये रहा यूरो येन पाउंड येन. इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं XAU USD, जो गोल्ड ब्यूटीफुल जा रहा है, ऑसम मूव. आई डिड नॉट रियली एक्सपेक्ट दिस मच ऑफ बिग मूव फ्रॉम गोल्ड, बिकॉज वी वर अवेयर कि गोल्ड दिखा रहा है बाई साइन, बट आई सेड आई वाज नॉट रेडी टू परचेज unless this 2060 level is cleared. मतलब माउंटेन टॉप जो क्लियर हो गया and it is firing up. So I'm bullish in gold. It's a awesome move, and I'll continue to remain bullish until I see a red caps. Red caps में मैं only I'll do a partial exit, और जैसा मैं दिखा fine tuning. This is the way I will enter the candle. Commodity में जरूरत नहीं उतना fine tuning का, because market is extended hours. Next we have silver. Silver gave a full green. कल काफी टफ फाइट हो रहा था. ये रहा सिल्वर, फुल ग्रीन कैंडल कल आया था XAG USD, बट इट इज रिच द लेवल, एंड लेवल होते हुए इज टुडे विज द, ये बोल रहा है कि हमें एंट्री करना चाहिए बिकॉज कैंडल इज हायर, बट वी कांट एंटर नाउ. सो ऑब्वियसली आप कहां पे एंटर करेंगे? यू आर गोइंग टू एंटर अबव 24.
crossing up 24 with momentum, that will be the point of re-entry, or you can play safe event की इसके ऊपर. Silver is still somewhat within the range. Breaking this one may not be easy. Now, with non-farm approaching, we may also see opposite side strong reversal. We don't know that. So currently, those जो लोग entry कर चुके हैं, I have not entered really. I'm sorry, I have not entered. You already, I was waiting for the candle close. Now I will. Why always? I don't wait for. Sorry, not always. I wait for candle close. It's basically the silver is in a contra trend. हम लोग बात किए, पहली बार दिख रहा है range का, और these are strong levels था. So I was not fully ready. Probably hindsight में देख के लग सकता है, if I would have entered here, then okay, this is a good size profit. But no, it did not enter. So I was waiting. It moved quite solid. My focus was fully on gold. Gold was giving an awesome move. वो मेरे buy trend में था. Why would I focus on the silver? But silver did give a better, obviously good move. सो यहाँ पे मैं कोई भी एंट्री नहीं करूंगा. वंस 24 के ऊपर ये स्टार्ट करने लगेगा मूव, देन आई ओनली लुक इनटू इट. कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन सा डेटा के साथ हो रहा है, प्लेन हो रहा है, ऑल दोज फैक्टर्स आई विल टेक इनटू अकाउंट. इसके साथ साथ लेट्स गो टू कमोडिटी. नाउ कमोडिटी का ये जो चेंज हुआ है मार्केट में रिगार्डिंग द डॉलर एंड जो गोल्ड सिल्वर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये बाकी कमोडिटीज को भी अफेक्ट कर रहा है अलोंग विथ चाइना. चाइना का जो कम बैक, इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग, बट लॉन्गर टर्म में कमोडिटीज आर स्टिल विद इन अ रेंज. सो इनको छोटा इसमें ऑपरेट करना ही बेहतर होता है. आई एम रियली नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ. इट्स वेरी मच रेंजिश. यहाँ पे मेरा जो सेकेंड रन, इसमें ज्यादा नहीं मिला था मूव, सो इट फेल्ड. So after this failure, I did not do anything much. So with this breakout, I did not take any positions. और currently really position लेने का प्लान भी जिंक में बना नहीं पा रहा हूँ कहीं, बिकॉज और जगह बेहतर ट्रेड्स दिख रहे हैं मुझे. सो आई एम नॉट रियली टू मच कि हर चीज मुझे ट्रेड करना पड़ेगा. बट कोई अगर जिंक में इंटरेस्टेड है तो 125 मिनट्स में प्राइस एक्शन बुलिश का इंतजार कीजिए, इस ब्रेकआउट का दीजिए, एंड इट इज लाइकली टू गो अप. स्टिल है चांस. और जिंक में एक्चुअली प्राइस एक्शन बुलिश आ रहा है, फुल ग्रीन कैंडल, बट क्लोज के लिए देखिए, वेट टिल क्लोज. तो क्लोजिंग पे देखेंगे. दिस इज बेसिकली अ वेरी टिपिकल टाइट रेंज. सो एंड येलो बैकग्राउंड, नॉट फुल्ली आई एम कन्विंस्ड कि मैं इसमें रिस्क लेना चाहूंगा. Next, I'll look at, this is my personal view. You can take, I may not be right. So kindly मेरे से influence मत कीजिए. This is, I am hoping, ये hope में कर रहे हैं कि this is helping someone. अगर आपको नहीं हो रहा है, don't watch my videos and you should make your own judgment. Always, I say to everyone कि आप खुद से ट्रेड कीजिए. Even जो मेरे सेटअप यूजर हैं उनको भी सेम चीज ही मैं बोलता हूँ. So copper, once again another counter जिसमें I'm not interested, but copper can give a comeback. अभी तक वो fail हुआ है. It can give a comeback. So हम लोग देखेंगे कि how it's going. एक full green candle, क्योंकि copper जो एक important level के है. देखिए यहाँ पे मेरा alert है. So how is it going with the level, और कैसे upside पे वो break हो रहा है 730 का, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो अनलेस आई सी दीज थिंग्स हैपनिंग, ये रहे कई सारे लेवल्स है यहाँ पे कॉपर्स का जो हम लोग डिस्कस किए. सो आई एम नॉट रियली वेरी मच अनदर काउंटर जिसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ. एल्यूमिनियम का एक अलर्ट मेरा हुआ था, 201.5 क्रॉस हो रहा है. एल्यूमिनियम ये रेंज होने के बाद गिव अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, बट सामने ये सारे लेवल होते हुए आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैंने अलर्ट डाला था कि 201.5 लेवल का ब्रेक हो, तो अलर्ट आई इफ आई वांट टू डू एनीथिंग, बट आई डिड नॉट डू एनीथिंग इनटू एल्यूमिनियम एज वेल. ये रहा एल्यूमिनियम में, इट इज द लेवल, इट इज वेरी क्लोज टू बाकी जो लेवल है. तो एक दो पॉइंट का जो मूवमेंट है वो गेम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एल्यूमिनियम, क्योंकि बाकी जगह वंस अगेन की बेहतर ट्रेड्स मिल रहे हैं. लास्ट जो दो काउंटर करेंगे, दैट इज क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस.
क्रूड ऑयल हैज टर्न्ड बैड, ये इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया. क्रूड ऑयल डिड नॉट वर्क आउट. 125 मिनट्स वार्निंग दे ही रहा था, but this is a very small quantity that I did, so I wanted to wait for the डेली चार्ट टू गिव मी मोर कंफर्मेशन. आज ऑलमोस्ट बिग रेड कैप्स दिखा रहा है, दो मैक्सिमम स्टॉप लॉस नीचे जाके प्रोटेक्शन बोला था, बट आई रियली डिड नॉट मूव माय स्टॉप मच, बिकॉज 6600 के नीचे जाने से ही मेरा अच्छा कंफर्ट लेवल अच्छा लगने लगा उस ट्रेड के बारे में. इट्स नो लॉन्गर वर्किंग. आई थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि am I bearish on crude? No, probably not. It's looking from the chart. No, I'm not really bearish on crude. Can it go up? Yeah, very likely it will go up. Then will I like to hold my position? No. First of all, my stop is hit, तो position hold करने का कोई बात ही नहीं बनता, ही तो hit होके loss हो चुका है. My entry was quite higher, so it's 6655. Now it's 6513 was the stop loss. So but if जब हम लोग का stop loss बड़ा रखना पड़ता है, ये मैं this is very important lesson कि जब हम लोग का stop loss बड़ा रखना पड़ता है, then you have to manage your risk with the quantity, because it is ultimately risk exposure management. But what I think is, I think crude is very likely will go further up, but इसमें मेरा और interest अब नहीं लगेगा, especially in the daily time frame. ये थोड़ा आई वॉज सस्पेक्टिंग, बिकॉज जिस तरह से ये स्ट्रक्चर हुआ है, ये सब रेजिस्टेंस लेवल्स, तो क्रूड इज गोइंग टू एक्ट लाइक जिसको बोलते हैं बकिंग बुल. मतलब इट विल गो अप, गिव अ लॉट करेक्शन, अगेन गो अप, गिव अ लॉट करेक्शन, अगेन गो अप. सो इसके ऊपर बैठे रहना विल बी वेरी डिफिकल्ट इन द डेली टाइम फ्रेम. ये मैसेज थोड़ा क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि दिस ब्रेकआउट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इसके ऊपर दिस इज द लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एंड इसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद भी वी आर नॉट गेटिंग अ वेरी स्मूथ रन. So I don't think if crude is immediately bearish, but overall this is going to probably going to go like this. But 6600 is another level. Just once again I'll place the alert. 6600 इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, देन देखते हैं क्या होता है उसके बाद. एंड लेट द मैक्स स्टॉप का जो अलर्ट, मैक्स स्टॉप का एक लेवल का अलर्ट डालने से वी आर डन. सो क्रूड ऑयल डिड नॉट गो वेरी वेल, बट क्रूड ऑयल का आउटलुक जो है वो अभी भी नॉट फुल्ली bearish. It's if we look at the forward curve, अपना जो कार्व का ट्रेड था, कार्व का ट्रेड काफी अच्छा गया है, बट कार्व में भी कल देखा जाए तो we saw a big sell off in the forward curve as well. But this was also a solid breakout, so I was really expecting a much bigger move, at least towards 1.13. यहाँ तक जाएगा, and crude will also give a solid move. The structure जिस तरह बना हुआ है कि यहाँ पे चार्ट का, this is a structure where it is very likely things go up to this level and very likely to this level. But one thing is clear, even अगर ऊपर उसको जाना भी है, at least the spread is currently not prepared to go above. So forward curve का this with this kind of sell off in the forward curve, and ये जो crude with my stop loss it is very likely we can't do much about it. तो यहाँ पे क्रूड ऑयल इज, जो लोग इंट्राडे में अगर देखना चाहेंगे व्हाट इज द सिचुएशन विथ क्रूड ऑयल, ओके सॉरी ऑटो करना भूल गया. This is did not go much in the 15 minutes chart. देखा जाए crude has been steadily moving lower, and unfortunately my stop जो था उस stop को hit हो गया, and broadly 6000 it's broadly gone. So अब जो crude oil है, it has come back to the down of this level,
and we are likely to see intraday consolidation. So ये जो awesome move intraday दिख रहा है, it is I think likely to slow down now. कई सारे congestion करने लायक levels available है, 6456, 6471, 6477 and 6484. So further और थोड़ा decline हो सकता है, क्योंकि यहाँ का जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इट्स क्लियर डाउन मूव दिख रहा है इन द 15 मिनट्स चार्ट. But we have to stick to our time frame. In my time frame, it is not much of a major move. अगर हम लोग सही होते, we could have gotten some good move on crude, but it did not work out this time. Next हम लोग जा रहे हैं नेचुरल गैस में. नेचुरल गैस 125 मिनट्स के चार्ट में हम लोग जा रहे हैं. जस्ट वेट इट आउट. यहाँ पे आरएसआई का क्रॉसओवर से क्लियरली दिख रहा है कि प्रेशर जो बाई का था, दिस बाइंग इज गॉन. नेचुरल गैस भी का देखिए सिमिलर स्ट्रक्चर कि थोड़ा अप देन ए करेक्शन, अप एंड करेक्शन. ये भी क्रूड ऑयल का भी सिमिलर स्ट्रक्चर वेरी लाइकली होने वाला है ऑफ बकिंग बुल. ये नेचुरल गैस का कमबैक चल रहा है, कमबैक को पेस हो रहा है जैसे ही हम लोग डिस्कस किए थे. वेरी लाइकली 174 ये जो लेवल है, ये टारगेट बनता है. तो ये करेक्शन के बाद अनदर राउंड ऑफ बाइंग लाइकली. सो आप 125 मिनट्स में एक कमबैक का राइड, मतलब प्राइस एक्शन बुलिश, प्राइस एक्शन बुलिश, शॉर्ट ट्रेंड बुलिश, ये अलर्ट डाल दीजिए. वंस शॉर्ट ट्रेंड मतलब बैकग्राउंड फिर से ग्रीन हो गया, then you can re-enter natural gas on the buy side with upper time frame में daily chart में about ये लेवल देखिए 174. और अगर ये लेवल का जब कंजेशन के बाद ब्रेकआउट होगा, दिस विल बी द नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट 205. तो ये रहे ब्रॉड डिस्कशन. काफी बड़ा वीडियो हो गया. हम लोग डिटेल डिस्कशन किए पोजीशन के बारे में. So I hope this video helps you. अगर help हो रहा है, don't forget to like and subscribe. All the best from my side and happy trading.